क्या आपको पता है दैट इन इंडिया देयर आर सम लीगल राइट्स जो सिर्फ स्टूडेंट्स के पास होते हैं? So hi guys, I am Shivika Mehra and in today's video we will be discussing those 10 legal rights that every student should be aware of. These rights range from right to education to right against harassment. So without any further ado, let's get started with the video. The first legal right is right to education. So basically जितने भी बच्चे हैं from ages 6 to 14 they have a right to free and compulsory education. So basically जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है उनके पास अधिकार होता है that they should be given free education. And ये right mentioned है under Article 21A of the Indian Constitution. So basically this is a fundamental right which is granted to each and every child. The next legal right is right against discrimination. So basically, as per Article 14 of the Indian Constitution, the children, the students cannot be discriminated on the grounds of religion, caste, color, gender, creed. So basically, किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी भेदभाव करना is against the law. And अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ discrimination होता है, किसी भी तरीके का कुछ भेदभाव होता है, so that is illegal and is not permitted by the law. Every student in India deserves equal treatment in educational institutions. The next legal right is right to a safe learning environment. So basically हर बच्चे का हर स्टूडेंट का अधिकार होता है कि जिस environment में basically वो पढ़ रहा है वो safe and healthy हो and उस education institution की responsibility होती है कि वो students को एक safe and healthy environment provide करे and student safety ensure करे. The next legal right is right against ragging. Ragging is strictly prohibited in universities by the University Grants Commission. So basically अगर किसी भी तरीके की कुछ भी ragging होती है in any university, in any educational institution, so the child जिसके against ragging हो रही है वो actually action ले सकता है against the person जो उसको rag कर रहा था. So basically students can file cases in case of ragging and this is the next legal right. The next legal right is right to privacy. So basically हर educational institution की ये responsibility है कि वो every student की privacy को protect करे. जो उस student की personal information है, जो उसके academic records हैं, उसको वो respect करे and student की privacy को maintain करे. And this right is very 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 closely linked to Article 21 of the Indian Constitution, which protects right to privacy of each and every citizen of our country, India, which also includes the students. The next legal right is right to freedom of expression. As per Article 19(1)(a) of the Indian Constitution, हर student के पास right है कि वो अपने opinions and अपने views किसी भी particular topic के बारे में express कर सके. So basically you as a student have a right and have the freedom of speech and expression. It is your right as a student to be able to express your opinions and views on a particular topic. The next legal right is right to protection from harassment. Students should be protected from any kind of harassment, including sexual harassment. So many educational institutions follow the policy जिससे वो अपने students को protect करते हैं against any act of sexual harassment or any other act of simple harassment. So basically अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी harassment होती है या फिर किसी भी बच्चे के साथ कुछ sexual harassment होती है, so that child can actually take an action against the person जिसके साथ कुछ गलत हुआ है. So basically you can file a case in your education institution. आप अपने education institution की committee में ये concern raise कर सकते हो. The next one is right to access information. So under the Right to Information Act of 2005 हर स्टूडेंट के पास अधिकार होता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है. वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उसके एकेडमिक रिकॉर्ड हो सकती है, उसके मार्क्स हो सकती है, रिगार्डिंग द इवैल्यूएशन हो सकती है ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. दिस इंक्लूड्स द एडमिशंस, द पॉलिसीज एंड द रिजल्ट्स. The next right is right to fair evaluation.
इसका बहुत सिंपल मतलब है कि स्टूडेंट्स के पास राइट होता है टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन ऑफ देयर एग्जाम्स। बेसिकली अगर आज किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसको अपने आंसर्स को चेक करवाना है, रीवैल्यूएट करवाना है, या फिर उसको जस्ट देखना है कि एग्जैक्टली उसके एग्जाम शीट की वैल्यूएशन हुई कैसी थी, सो टू बी एबल टू आस्क फॉर दैट इज एवरी स्टूडेंट्स राइट। आपके पास अधिकार है कि आप अपनी टेस्ट कॉपीज ओपन करवा सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको मार्क्स किस बेसिस पे कौन से आंसर में कितने मिले हैं। So basically students can actually apply for rechecking and revaluation अगर उनको लगता है that they have not been marked in the best way possible, and ये आपका legal right है। So in most cases this is allowed, but of course you have to check with the rules of your education institutions। अगर आपका education institution allow करता है revaluation and rechecking, then you can definitely go for that। अगर आपको लगता है कि आपके marks मे बी किसी सब्जेक्ट में उतने आए नहीं हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और यू आर नॉट very sure that how actually you were marked on a particular answer, you can ask for re-evaluation। And the last and a very important legal right is right to legal remedies। So basically अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, that student has a right to approach the courts of law and seek justice। I really hope that you found this video useful। आपको पता चले होंगे that what exactly are your legal rights as a student in India। So basically, if you exercise these 10 legal rights, then you can actually be very safe and secure in your education institution and can exercise your right to education। Additionally, I would just like to mention that I come up with legal videos in which I explain law concepts in the simplest way possible with very relatable real life examples। अगर आपको किसी law topic में कुछ भी doubt है, you can let me know in the comments down below and I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples। Additionally, अगर आपने मेरी अभी तक बाकी law videos नहीं देखी हैं, you can watch them। You will find the link in the description down below and also in the pinned comment। ये videos देख के आपको एक fair idea होगा कि मैं कौन से टाइप की लॉ वीडियोस पोस्ट करती हूँ। Till then, please like, share, comment and subscribe, watch my other legal videos and stay tuned for many more legal videos which are coming your way, and please take care of yourselves। Bye bye।